previously we discussed about biodiversity, taxonomy, what is the meaning of taxonomy, what is the meaning of biodiversity, what are the different levels of biodiversity. So simply now we can easily say biodiversity refers to there is the variety of life forms found in the earth surface is known as the biodiversity. Now to study this all the life forms, it may be plant, it may be animal, it may be microorganism, we move to the another branch, that one is the taxonomy. And what is the meaning of taxonomy? Simply to study the living organism. The taxonomy is a main branch, or it is a branch of science which deals with the study of identification, nomenclature and classification of the living organism. Okay, so from the taxonomy we concluded three things. That one is the identification, nomenclature, and last one is the classification. And what is this meaning? Identification means चिन्हट प्रक्रिया, nomenclature means नामकरण, classification means विभागकरण. तो biodiversity रे पाउथुबा the all the life forms found in the biodiversity, we need to make a proper classification. Okay, to study the proper classification, different scientists give their different hypotheses. Already in your botany starts the 5 kingdom classification, and in the zoology part we are you saw the animal classification. Like that, different classification strategy are accepted by the biological science. So before we move to you 5 kingdom classification or animal classification, whatever it may be, you need to know about what are the basic criteria to classify the organism, or by which process we can classify the all the life forms. Maybe it is plant, maybe it is animal. If we saw your surroundings, mainly you found all the plants, all the animals, but under the microscope you can find the microorganisms. Like that, in this biodiversity you need to classify them. So now question arise, how we can classify those living organisms. So the simple answer is by knowing their characteristics. सेमानकर हमें कैरेक्टर्स जानिया को पड़िबो. कैरेक्टर्स माने कौन? गुण. कैरेक्टर्स हमें जानिबा द्वारा आमे कौन करि परिबा? से प्लांट हो, एनिमल हो बा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, जहाँ भी ऑर्गेनिज्म रही बायोडाइवर्सिटी रे, आमे सेमानकर कैरेक्टर्स जानिबा द्वारा, कैरेक्टर्स माने कोन? गुण. तो आमे जेते बेले जे कोनोसी ऑर्गेनिज्म को जानुचे बाय केमिति जानुचे? बाय देयर नेम. तो नेम टा आमे केमिति रखिचे? बाय नोइंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ व्हिच टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स वी आर कंसीडरिंग अंडर द क्लासिफिकेशन, और बाय इन which account of the characters we classify that plant, animal and microorganisms. So characters may be its which type of characters? May be morphological means external structure को हमें देखि कि classify करि परिबा. May be anatomical means their internal structure, or whatever it may be their cytological by study they are the cellular characteristics, or by their histology means study of the tissue, a group of cells जाको हमें कहूँ study of tissue. Histological characteristics को consider करि परिबा. आउ को characters को consider करिबा. their genetics
Genetics कौन? That is the study of their heredity and variation, or simply the transmission of character from one generation to the another, from parent to offspring. This study is known as the genetic. So maybe it's a genetical character. Next is the phylogeny. Phylogeny means their evolutionary relationships with their ancestors. Maybe phylogeny, maybe affinities. Okay, so these are the different base of characteristics, or these characteristics may under consideration we can classify the plant, animal or microorganisms. ताले हमें कोई प्रकार characters देखिए, में भी morphological, में भी anatomical, में भी histological, में भी cytological, में भी genetical, में भी phylogenetical, okay, or maybe its affinities. By considering those characters, we can easily classify that living organism found under the biodiversity. Okay, so now we move to the next part of the classification, how we can easily classify those organisms by considering their characters. आमे सेमानकर characters को लक्ष्य करिकी केउ भली भाबरे आमे कहिले जे characters को लक्ष्य करिकी, और by the considering the characters we can easily classify those organisms. Now question arises, how we can classify those organisms. To proper classification, to know the proper classification, we move to the next part of the taxonomy, that is the taxonomic hierarchy. So आमे कहले by considering the different characteristics we can classify plant animals. So to proper classification, to know the proper classification, way of classification, we need to know about the taxonomic hierarchy. So what is the meaning of taxonomic hierarchy? So taxonomic hierarchy refers to, it is a framework by which we can arrange or sequence the living organism into different categories on the basis of their characteristics. Again I repeat, what is the meaning of taxonomic hierarchy? The framework by which organisms are arranged in a definite sequence or order from higher to lower category. Just write down this definition. What is the definition of the taxonomic hierarchy? It is a framework of biological, it is a framework of biological, or you can say it is a framework of living organism. Framework of living organism where we can make a proper sequence from higher category to higher to lower category.
Okay, so this is very important. What is the meaning of taxonomical hierarchy, but how we can classify those organisms? So we need to know about the taxonomic hierarchy. So what is the meaning of taxonomic hierarchy? It is a framework of living organism where we can make a proper sequence from higher to lower category. This is known as the taxonomical hierarchy. आमे गोटे फ्रेमवर्क बनैबा, आमे गोटे प्रॉपर वे बा प्रॉपर सीक्वेंस बनैबा, जो सीक्वेंस रे आमे कोन करि परिबा, लिविंग ऑर्गेनिज्म माननकु क्लासिफाई करि परिबा. केमिति क्लासिफाई करिबा कहि दैछो, बाय कंसीडरिंग देयर कैरेक्टर्स. आमे फास्ट ऑन कले कैरेक्टर को कंसीडर कले, तापर हम क्लासिफिकेशन केमिति करिबा, लाइक दैट, बाय नोइंग देयर द by making the framework of this animals or plants or maybe organism. So this is the taxonomic hierarchy. Now this taxonomic hierarchy give simply a framework of the living organism. तो सही framework रे कौन रहिबो, से each framework बा each category का हमें कौन कहि परिबा, each the category that we found under this framework called taxa. TAXA. This is the plural form and singular रे taxon. मने रखियो. Okay, so taxonomical hierarchy is a framework of the living organism, and this the framework living organism जो category रहिला, सही category गुडा को हमें कौन कहि परिबा, taxa बा singular ता को हमें कौन कहि परिबा, taxon. So what are these, now question, what are these categories? कौन से categories रहिला देखिबा. In taxonomical hierarchy we found the different types of categories in a framework manner, and what are these taxa? So simply there are 7 taxa. There are 7 important one. There are 7 taxa found in this framework. So students, this is very simple thing. Taxonomical hierarchy रे हमें जो प्रकार framework बनेले to classify the living organism, it consider the 7 taxa. So what are these 7 taxa? See it properly. It is very important. By knowing these 7 taxa, you can classify the plants as well as animals, also microorganism. So this is very important. This is the base. By knowing this taxonomical hierarchy, by knowing this framework, you can easily classify the plants as well as the animals. Either it is in the 5 kingdom classification or it is maybe the animal kingdom. So this is the basic things. So to listen properly, so what is the meaning of the taxonomical hierarchy and what are the 7 taxa found under this framework. So first taxa is the kingdom. First taxa is the kingdom. Second is the phylum. This is the framework structure. And third one is the class. Fourth one is the order. Fifth one is the family. Sixth one is the genus. Seventh one is the species.
So this is the framework of all the living organism. By knowing these 7 taxon, these are the taxa, singular in taxon, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and last one is the species. 1 2 3 4 5 6 7. This is 7 taxa found in this framework. By knowing this framework, we can classify the plants, animal, or maybe microorganism. ताहले हमें क्लासिफिकेशन करिया में फास्ट कौन कंसीडर करथिले कैरेक्टर्स, कौन टाइप रो कैरेक्टर्स मध्ये कहली बा व्हिच टाइप ऑफ कैरेक्टर्स वी कैन कंसीडर. देन सेकंड रे हमें कौन जानिले देयर framework. In this framework we can easily classify any living organism. I also give you one example, but this is the last to the example कोटे देबले जानि परिबो. बट हमें ता आगरु जानिबा what are these different taxon. हमें सिंगल taxon विषय रे जानिबा. ए taxon को हमें कोन कहि परिबा. सो तुम कोन जानिलो जे ए मानकर कैटेगोराइजेशन केमिति हेची फ्रॉम हायर टू लोयर हैला. एमानकर हायर रु लोयर कैटेगरी हेची, हायर रु लोयर कैटेगरी हेची जो थरे हमें कौन कौन पाउजे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज. सो नाउ यू कैन से स्पेसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. स्पेसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. जाति जाति यही सभा शेष कथा. ए स्पेसीज को जेतेबेले हमें जानि परिबा सेतेबेले हमें कोन जानि परिबा इंडिविजुअल विषय जानि परिबा. मने पका मु प्रीवियसली तो मु कोन कहितली जे कोन भले भाबरे गोटे इंडिविजुअल क्रिएट होउची, से मानकर लिविंग सेल्स रहउची, सेल्स मानकर कॉम्बिनेशन ले टिश्यू होउची, टिश्यू माने ऑर्गेनाइज करी कि ऑर्गन्स होउचंती, एंड ऑर्गन्स मानकर कॉम्बिनेशन ले कोन होउची ऑर्गन सिस्टम होउची, ऑर्गन system होउची. एंड दिस ऑर्गन सिस्टम by coordinatingly work and create a or form a organization or you can say or individual यही भाई भाव में जानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानकर बाय द वे फॉर्मेशन है गोटे इंडिविजुअल बा ऑर्गेनाइजेशन ले क्रिएट होचंती. तो ताहले हमें स्पेसीज का कहबा ताहले हमें जानिबा ये जो डिफरेंट टाक्सा कहले ये डिफरेंट टाक्सा रो प्रॉपर डेफिनेशन कौन हो. ताहले फास्ट मु तो मु कोन कहली द व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, हु इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, दिस इज द स्पेसीज. स्पेसीज इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो यही भाया वे रे जतले गोटे फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होची बा इंडिविजुअल होचंती से कहला द स्पेसीज रेफर्स टू ताले बर्तमान कौन है इंडिविजुअल्स गुड़ी को क्रिएट है बा ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल्स रहिले. ताले स्पेसीज हमें क्या कहबा, स्पेसीज हमें क्या कहबा ए ग्रुप ऑफ individual having similar characteristics, a group of individual having similar characteristics and they can breed among themselves and produce their own kind. Then it is called as species. सिंपली बुझे चेष्टा करो. एठी आम जानीपारे कौन भाई भाव में इंडिविजुअल क्रिएट होता. तो इंडिविजुअल्स मानकर समाहार रे तैयारी होइथिबा गुटिए
जाति स्पेसीस ओडिया कौन जाति एवं सेमानकर मेजर कैरेक्टर कौन होइतिबो दे कैन प्रोड्यूस देयर ओन काइंड बाय ब्रीडिंग देमसेल्फ बा सेमानक भितर ब्रीड हैला फଳରେ सेमानक भितर क्रॉस हैला फଳରେ सेमाने निजो भलिया ओन काइंड बा निजो भली कौन करि परिबे इंडिविजुअल मानकू प्रोड्यूस करि परिबे सेते बेले हमें स्पेसीस कहबा आमे जानि जे कौन स्पेसीस ह्यूमन स्पेसीस काउ स्पेसीस फिश मानकर रही स्पेसीस देन इफ आई कंसीडर द प्लांट्स मैंगो हैला देन इज द banyan tree okay like that different species you found in our surroundings maybe plant maybe animal it's maybe microorganism tale a group of individual having similar characteristics and they can breed among themselves and produce their own kind then it is known as or it is called as the species hete bele tak ame species कहले and just remind species is the unit of classification विभागीकरण एकक है जाति बा स्पेसीस क्वेश्चन आसे हु इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन यू कैन से स्पेसीस इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ताले स्पेसीस हमें काहा को कहले ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स व्हिच कैरेक्टर्स आर सेम सेमानकर कैरेक्टर सेम हेतिबो दे कैन ब्रीड एमंग देमसेल्फ निजो भितरे ब्रीड करिवो ह्यूमन केबे काउ संगे ब्रीड करिवोनी ह्यूमन संगे ब्रीड करिवो मेल फीमेल भितरे ब्रीड हबो केबे ह्यूमन काउ संगे ब्रीड करिवोनी कि काउ ह्यूमन संगे ब्रीड करिवोनी काउ त निजर स्पेसीस भितरे करिवो सो दिस इज नोन एज द स्पेसीस सो दिस इज द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तापर स्पेसीस पर कि आसीबो नेक्स्ट वन इज द मन रखिबो से 7 डिफरेंट टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची स्टार्टिंग फ्रॉम किंगडम फाइलम देन क्लास ऑर्डर फैमिली ओके जीनस एंड स्पेसीस ये जो 7 कैटेगरी मन रखिबो तापर जेतरे स्पेसीस मानकर क्रिएट हो सारा एक रे गला स्पेसीस तापर आम 2 रे क्या जा स्पेसीस उपर किए रहिबो जीनस सिंपल कथा आम जदि यूनिट को जानी परिबा आम जदि क्लासिफिकेशन यूनिट जानी पारे ताहले तापर बाय द बाय आम तैयारी करदेबा ताहले जेतेबेले ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को आम स्पेसीस कहले ताहले बहुत गुड़े स्पेसीस मिसिले ताको आम जीनस बा जेनेरा कहले जीनस रिप्रेजेंट बाय ए ग्रुप ऑफ स्पेसीस जीनस रिप्रेजेंट बाय ए ग्रुप ऑफ स्पेसीस ओके नाउ मूव टू द 3 रे ऑर्डर ताले जीनस कौन कहले ग्रुप ऑफ स्पेसीस इज कॉल्ड एज द जीनस देन मूव टू द आफ्टर स्पेसीस देन जीनस देन मूव टू द फैमिली ओके फैमिली क्या कहबा ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस फैमिली ए ग्रुप ऑफ क्लोजली related genus is called family हैला तापरे 4 नंबर के आसीबो फैमिली पर के आसीबो ऑर्डर इट रिप्रेजेंट बाय ए ग्रुप ऑफ फैमिली सिंपल ताले जतरे बहुत गुडे फैमिली को मिसे देबा सेतेबेले कोन हबो ऑर्डर ए ग्रुप ऑफ फैमिली represent an order ओके तापरे 5 रे के रहइबो 5 रे के रहइबो क्लास सिंपली क्लास रिप्रेजेंट बाय ए क्लास रिप्रेजेंट बाय अ मेनी रिलेटेड ऑर्डर्स ओके सो जतले आमे बहुत दूरे ऑर्डर पाइबा ताको आमे कोन कहि परिबा क्लास ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर रिप्रेजेंट ए क्लास ओके 6 रे क्या आसीबो दैट वन इज द फाइलम और डिवीजन यू कैन से फाइलम
ए ग्रुप ऑफ क्लास, मेनी क्लास रिप्रेजेंट फाइलम, मेनी क्लास represent a phylum, and last one is the kingdom. This is the highest taxon of the क्लासिफिकेशन ये सबुठू हाईएस्ट टैक्सन ले रहिबो। ताले यूनिट किए थिला क्लासिफिकेशन लो स्पेसीज, हाईएस्ट कैटेगरी रे किए आसीबो किंगडम। बाय नोइंग दिस थिंग फास्ट आमे जानिले देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, मे बी इट इज मॉर्फोलॉजिकल, मे बी इट इज एनाटॉमिकल, जेनेटिकल, फाइलोजेनेटिकल, हिस्टोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। देन व्हाट वी विल नो अबाउट देयर द taxonomical hierarchy, or we make a framework. What is the framework? Starting from the unit of species, then genus, family, order, class, phylum and kingdom. This is the last one. Kingdom is the highest taxon of this classification. So you know the 2 kingdom classification, 5 kingdom classification, animal kingdom of classification बा एनिमालिया, प्लांटी सब किंगडम। एनिमालिया माने बुझियो माने समस्त एनिमालिया सेथरे रहि जंती बा समस्त एनिमल्स माने रहि जंती। दिस इज द एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम कोइ माने सब प्लांट किंगडम तुमे ता अंडर रे पाइबे। तो एई भले भाबरे हमें कैटेगरी करी हमें ईच इंडिविजुअल जोउडा हमें पाउचे under the biodiversity we can easily classify. So this is all about your the classification strategy. By using this you can easily identify the or the classify the organism. Now question arise, we first identify, हमें प्रथमे चिन्हट प्रक्रिया कले, क्लासिफिकेशन कले। नाउ क्वेश्चन अराइज हाउ कैन वी नोमेनक्लेचर बा नामकरण को भले भाबरे हमें करिबा। दिस इज वन ऑफ द एनदर एस्पेक्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन। ताले हमें कौन कले, हमें जानी पारले क्लासिफिकेशन केमिति करिबा, आइडेंटिफिकेशन मध्ये हमें करि पारले। काहे कि ना प्रथम आइडेंटिफिकेशन पर ही जा किछि हो, प्रथम हमें चिन्हिले जानिले, तापर हमें ताकू जानिला पले समस्त को मध्ये जणेबा दरकार ए ऑर्गेनिज्म टी किए जानिया पई हमें क्लासिफिकेशन लो क्राइटेरिया कले। तापर हमें कौन जानिबा जे सेमानकर नोमेनक्लेचर स्ट्रैटेजी और नोमेनक्लेचर। तुम मानकर जमी नोमेनक्लेचर होउची नामकरण, अन्नप्राशन रे तुम मानकर नामकरण होउची, तो एमानकर अन्नप्राशन होबो मींस एमानकर नोमेनक्लेचर होबो बा एमानकर नामकरण प्रक्रिया रहिबो हला। सो इट इज ए साइंस वेयर द सिस्टम ऑफ नेमिंग्स ऑब्जेक्ट्स पर्टिकुलरली दोज ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन। सो सिंपली नोमेनक्लेचर कोन मीनिंग रहिबो, इट इज द सिस्टम ऑफ naming the objects, which objects particularly from biological origin, then it is known as the nomenclature. नामकरण प्रक्रिया देखिबा कोन भले भाबरे हमें नामकरण करिबा। सो आमे नामकरण करिवो। सो हाउ तो माने को सर आमे तो नामकरण ऑलरेडी करि सारचे, आमे मनीष कहूचे, आमे गाई कहूचे बा आमे काऊ कहूचे बा आमे तापर आमे जदि कोडी सुआ कहूचे, सुआ सारी कहूचे, तारे प्लांट को आंब गछ कहूचे, तेंतुली गछ कहूचे, सर आमे तो ऑलरेडी वी गिव देयर नेम्स। सो व्हाई देयर इज द नीड ऑफ द नोमेनक्लेचर? वी आर ऑलरेडी गुड साइंटिस्ट, वी हैव ऑलरेडी नेम्ड देयर लोकल नेम्स। सो सिंपली दीज आर द लोकल नेम्स or common names which are not accepted in the every part of the world. So for to overcome this confusion, to overcome, तमे जाइचो फॉरेन कंट्री रे तमर कोन हैला, तमर इच्छा हैला जे फॉरेन कंट्री रे रहिथिबा मु कोन करिवि, मु किछि क्रॉस स्पेसीज देखिया पई चाहूची बा काउर स्पेसीज। तमे जाई गुटे पचारिबो जे भाई जे कैन यू सी मी द काउ,
So cow कौन I don't know about the cow. What is the meaning of cow? So now this controversy or there this confusion found by knowing there the local name. तो आमे सब local name देइजो एगुडा को केही जानतनी only आमे जानिचु तमे माने मते कहले मु बुझी परिबी किंतु बाहर केही बुझी परिबेनी तो आमे कोन कहले सेति पई लिविंग ऑर्गेनिज्म मानकर कौन करवा वैज्ञानिक नाम दबा ऑलरेडी तुम पढ़ीच बा ताको आमे कौन कहि परिबा साइंटिफिक नेम by knowing the scientific name we can easily nomenclate or name by knowing the scientific name in every part of the world if you tell that scientific name he or she will recognize what kind of plants or animals you are trying to speak तमे को प्रकार रो एनिमल्स प्लांट्स विषय कहिया पई चाहू तमे जे तार साइंटिफिक नेम टा प्रोनाउंस करिवो बा स्पेल करिवो सेते बेले ही जानि हबो जे तमे को प्रकार रो ऑर्गेनिज्म विषय जानुचो तेनु नोमेनक्लेचर आमे कोन करिवा आमे सेमानकर साइंटिफिक नेम दबा बा वैज्ञानिक नाम दबा ओके सो कौन देखिबा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द साइंटिफिक नेम टू नो द साइंटिफिक नेम वी मूव थ्रू ए प्रोसेस और दैट नेमिंग इज नोन एज द बाइनोमियल nomenclature this is very important one तो को भले भाव में साइंटिफिक नेम दे परिबा बा लिविंग ऑर्गेनिजम्स मानकर नेमिंग करि परिबा बाय यूजिंग द बाइनोमेनक्लेचर प्रोसीड्यूर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बाइ मीन्स दुई नोमियल मीन्स नेम से मानकर नामकरण करिबा जोथिरे हमें दुईटा वर्ड यूज करिबा ओके सो दुईटा आमे कौन करिबा बाइनोमियल बाइ मीन्स दुई बाइ मीन्स टू ओके सो टू overcome the different difficulties of the common name now we are preparing one of the very acceptable concept to know the scientific name it is the binomial nomenclature so the process of naming by using the two parts so what is binomial nomenclature the process of naming of organism by using two parts by means दुई कौन कौन one is the generic part second one is the specific part but simply you can generic part means genus specific part means species देखो तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर आम कौ भाई भाव में नामकरण करवा बा वैज्ञानिक नाम दबा बाय यूजिंग देयर जीनस एंड स्पेसीज नेम जीनस एवं स्पेसीज नेम को लक्ष्य करके आम कौन करिपरिबा तार यूज करि परिबा बा साइंटिफिक नेम्स को हमें क्रिएट करि परिबा यू नो हु इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लोस लिनियस इज द नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी एंड आल्सो कार्लोस लिनियस इज नोन एज द और प्रोड्यूस और इंट्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर इज नोन एज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अगेन आई रिपीट सो हाउ वी कैन नेमिंग दोज ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग दिस प्रोसीड्यूर इज द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर अंडर दिस binomial nomenclature we are using the two parts one is the generic part and another one is the specific part generic part is the genus and the specific part of the species ताले देखो हम जो कहिले तुमको 7 hierarchical process रही छी बा 7 taxon रही छी से taxon रो लास्ट नंबर 6 नंबर आउ 7 नंबर genus आउ species की यूज करके हमें नेमिंग करबा हमें ऑलरेडी क्लासिफिकेशन करले कोन भले भाबरे कैरेक्टर को कंसीडर करके कोन भले भाबरे फ्रेमवर्क को यूज करके क्लासिफिकेशन करले आइडेंटिफाई कले तो बर्तमान आम तार साइंटिफिक नेम क्रिएट करिया कोन भली भाबरे बाय यूजिंग दिस प्रोसीड्यूर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर also another one is the trinomial nomenclature present trinomial तीनटा ना कौन कौन रहिबो सेथरे रहिबो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन रहिबो
बाई मीन्स दुई ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर रहिबो जीनस प्लस स्पेसीज प्लस सब स्पेसीज है जीनस स्पेसीज एंड सब स्पेसीज मीन्स स्पेसीज किसी सब स्पेसीज मिलुथो जदि सही प्रकार ऑर्गेनिजम्स मानकर आम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर गोटे खाली एग्जांपल दे दूची काउ बा क्रो क्रोर साइंटिफिक नेम है कर्भस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस okay corvus splendens splendens it is indian species okay other subspecies also found in the Burma and Sri Lanka and this Burma species is known as the this is the found in India corvus splendens insolens स्प्लेंडेंस इंसोलेंस दिस आम कर्भस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस माने जानले काउ बोली ओके तो ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर गोटे एग्जांपल तो मुझे दूसरी ये है बर्मा स्पेसीज बर्मा एरिया रे यही प्रकार स्पेसीज देखा आउ गोटे रही तुम श्रीलंकान स्पेसीज कर्भस स्प्लेंडेंस प्रोटिएगेटस नेक्स्ट वन इज द कर्भस ओके प्रोटिगेटस है दिस इज द श्रीलंकान स्पेसीज है तो ये भाव में ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर रही ओके सो आम जानिले मेजरली आम कौ नोमेनक्लेचर को कंसीडर कले बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कारण मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स मानकर ओनली बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही रही से कहला जे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करने इंटरनेशनली किसी गाइडलाइंस तैयारी करागला एवं इंटरनेशनल नेम तांकर दियागला आंतर्जातिक स्तर रे नेम टी एक्सेप्टेबल रहिला बाय यूजिंग द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर फॉर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आर क्रिएटेड हु कैन नेम their scientific name so who are they for the plants one of the international organization they can name the all the plants so what is this is the ICBN what is the meaning of ICBN question ase international code of botanical nomenclature सबू प्लांट्स नेमिंग किए करिवो ICBM एनिमल्स ताले कौन हम एनिमल्स किए हम ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर है प्लांट्स एवं एनिमल्स मानक नेमिंग करने यही ऑर्गेनाइजेशन अच्छी आउ गोटे ICBN अच्छी दिस पार्ट इज द
First gala ICBN कौन International Code of Botanical Nomenclature who can name the scientific names of the all the plants. ICZN is the International Code of Zoological Nomenclature. They can name the different animals. Another ICBN also present. This is the International Code of Bacteriological Nomenclature. ताल जानी पार्थो ये को प्रकार ऑर्गेनिज्म रो नेम दब सी है किए दब बैक्टेरिया मानकर बैक्टेरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICBN. एनदर वन आल्सो प्रेजेंट ICVN. This is for the all same International Code of Viral Nomenclature. सब भाइरस मानकर भूताणु है. आउ गोटे अच्छी लास्ट वन इज द ICNCP. International Code for Nomenclature of cultivated plants. So these are the different organizations where they can make the name of the different animals, plants and the microorganisms. Now the last part of the binomial nomenclature. This is very very important. How you can nomenclate the different organism or what are the guidelines, कौन rules and regulation रही. आमे जानले binomial nomenclature आमे केमिति करियो by using there the genus and species name. genus एवं species name को combine तमे रेडी करिवो ताको आमे कोन करिवा ताको आमे कहिबा binomial nomenclature. So what are the rules or the guidelines? Okay, each organism have only one scientific name. Only गोटे organism रो गोटे scientific name दी चारटा रहिबनी. Only गोटे रहिबो हला. Which comprises of genus and species. दीटा पार्ट रहिबो. फर्स्ट पार्ट कोन रहिबो? Which comprises of generic name and second one is the generic names mean कौन genus name. Okay, genus name आउ गोटे कौन रहिबो specific name or species name हला. So this is the second one. Already तुम जानी छो. आउ कौन रहिबो? Then the when we writing this scientific name, the first letter ए डिक लिखु जी the first letter of genus name is capital letter. साइंटिफिक नेम सेकंड नियम कौन आसला जीनस नेम रो फर्स्ट लेटर टा कौन हबो कैपिटल लेटर. स्पेसीज नेम starts with small letter.
ओके तापर आउ कौन आसीबो व्हेन साइंटिफिक नेम प्रिंटेड when scientific name is printed print करा जिवो then it is in italic format रहिबो हैला देखियो एमती नेम गुडा लिखा जाइथिबो कोन भले भाबरे कहले धरो मोटी रूल्स लिखि छी एमती रूल्स टा एमती ए भले भाबरे लिखा जाइथिबो हैला इटालिक्स नेम प्रिंटिंग जतले करा जीवो सेतले ताको हमें इटालिक फॉर्म रे लिखिबा को पड़िबो दिस आर द गाइडलाइंस तापर नेक्स्ट गाइडलाइन कोन रहइबो नेक्स्ट गाइडलाइन कोन रहइबो when scientific name is handwritten जेतेबेले हम हाथ रे लिखिबा हैंड रिटिन आमे तो हाथ रे लिखि परिबानी इटालिक करी की ताले हम कोन करबा नॉर्मली लिखिबा जीनस रो फर्स्ट लेटर बड़ रहिबो तापर सब स्मॉल लेटर रहिबो जीनस सब स्पेसिस भितर स्पेस रहिबो एंड आउट एटा इंपोर्टेंट रहिबो हाथ रे जेते लिखिबा हम कहार साइंटिफिक नेम व्हेन साइंटिफिक नेम इज हैंड रिटिन देन underline separately तक हमें अंडरलाइन करबा जो कहथले एबे टिके आगु क्रो स्प्लेंडेंस बा कर्वस कर्वस separately underline splendens separately underline and another splendens is the separately underline. Okay, so this system or this is the rules and the only I will tell the last rule after writing the S name মানে scientific name need to write their scientist name with year. हला so name of the author ताको author कर दे बेटर हबो देयर author माने किए बाहर करचंदी author हला so these are the rules and regulation for the binomial nomenclature or for the to write the scientific name मन रखिबो ए सब क्वेश्चंस आसीबो तमर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स रो क्वेश्चन rules of binomial nomenclature, what is binomial nomenclature, what is taxonomical hierarchy, what are the different taxa of the taxonomical hierarchy. आ खाली गुटे कथा मन रखो law of priority. What is that? If two or more name for a single species is formulated by different author on different time period who is the
फास्ट ऑथर he or she is being फास्ट प्रायोरिटी ताकू ही फास्ट प्रायोरिटी दिया जी प्रथम बाहर कर से ही रहियो दिस इज द लॉ ऑफ प्रायोरिटी इफ टू और मोर नेम फॉर ए सिंगल स्पेसीज इज फॉर्मुलेटेड बाय डिफरेंट ऑथर ऑन डिफरेंट टाइम पीरियड एंड हु इज द फास्ट ऑथर ही और सी इज बीइंग फास्ट प्रायोरिटी ओके दिस इज द law of priority. Okay, so this is all about your the way of classification, nomenclature and identification. तमे ए तीनटा जिनस रे जानि गलो ना तमे बे तुमको इजी लागियो पढिया पई फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जोदरे तमे पढुचो मनेरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटाई एनिमलिया देन इन एनिमल क्लासिफिकेशन ले एनिमलिया विषय पढिबो कोडेट्स नॉन कोडेट्स सिलोमेट्स सीडोसिलोमेट्स डिफरेंट थिंग्स यू कैन फाउंड अंडर दिस. So by knowing this basic concept of the classification strategy you can easily nomenclate or know a species in a biodiversity. So only one classification structure I made and I will make, and in the next class I will give you different scientific names, then you need to remind all the scientific name. खाली today मु खाली गोटिए तुमर करिक देखे दउची ह्यूमन्स मानकर को भले भाबरे से मानकर 7 टाक्सा रे तांको हम सजेकी रखिबा को भले भाबरे उटे स्पेसीज को हम क्लासिफाई करिबा. कहार नबा एग्जांपल ह्यूमन स्पेसीज किंगडम आरंभ हम कौटू किंगडम रु. ओके किंगडम कौन रहिबो एनिमालिया. किंगडम पर किए आसीबो फाइलम. ओके फाइलम रे किंगडम इज द एनिमालिया फाइलम इज द कोडाटा. फाइलम पर किए आसीबो क्लास. क्लास कौन हम मामालिया. क्लास पर किए आसीबो ऑर्डर. ऑर्डर रे किए आसीबो प्राइमेट्स. ऑर्डर पर किए आसीबो फैमिली. फैमिली रे कौन हम होमोनिडी. तापर किए आसीबो जीनस. जीनस रे आसीबो होमो. तापर आसीबो स्पेसीज सापिएंस या सब स्पेसीज मध्य सापिएंस. ताहले यार नोमेनक्लेचर नेम कौन हम वी आर यूजिंग द जीनस एंड स्पेसीज नेम. जीनस नेम टा फास्ट रहिबो कैपिटल HOMO हैला सापिएंस. sapiens subspecies madhya sapiens separately underlined and these are the small letter. This is the scientific name of human. अदर मध्य स्पेसीज मानकर साइंटिफिक नेम आम क्रिएट करवा नेक्स्ट क्लास रे तुमको बतेबी. सो दिस इज ऑल अबाउट योर द क्लासिफिकेशन स्ट्रैटेजी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची रूल्स एंड रेगुलेशन. ओके एंड इन दिस वे दिस इज द you know the basic concept of classification. Now you can easily classify the डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सिंपली तुम मन रखिबो क्लासिफिकेशन पई कौन कौन जानिबा दरकार. फास्ट जानि दरकार सेमानकर कैरेक्टरिस्टिक्स मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल जेनेटिकल फाइलोजेनिकल एंड एफिनिटीज देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ए सब कैरेक्टर्स विषय तुम जानिबा दरकार. सेकंड रे कौन जानिबा दरकार टैक्सोनॉमिकल हिरार्ची 7 टाक्सा विषय जानिबा दरकार. एंड थर्डली कौन जानिबा दरकार सेमानकर साइंटिफिक नेम कौन होची. तो एई भले भाबरे तुम क्लासिफिकेशन को थरो आउट करि परियो. ओके दिस इज ऑल अबाउट आवर क्लास. इफ you have any doubt you can ask. Thank you.